classes. I hope that you people are ready. We already have discussed many topics in grammar, so today I have come with a new topic that we are going to discuss. It's a very easy topic that is related to sentence. In grammar, it is also called clauses. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज नोन एज clauses. Okay, what is a clause? How many kinds are there of each clause? And what are the examples related to the kinds of clauses? We are going to discuss it today. So please be ready with the notebook and the pen. Now let's consider this sentence. It's a very simple sentence that I'm going to write. I like English grammar. तो ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस कैन बी स्टेटेड एज अ क्लॉज. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम लोग क्लॉज भी कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में. Actually, thing is, what is there in the clause? Clause is a type of a sentence. The type of a sentence which includes noun, adjectives, verb, or you can say a whole part of speech. ठीक, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो होती है उनको कंबाइन करके वी कंबाइन इट टुगेदर एंड वी फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस दैट इज़ नोन एज क्लॉज. तो इन सबको कंबाइन करके क्या बनता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट होता है. दैट इज नोन एज क्लॉज. Now let's figure it out. What is a sentence? तो ये तो बेसिक सी चीज़ है जो आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से. सेंटेंस क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. I hope that you people are noting it down. A group of words that makes कंप्लीट सेंस. तो सेंटेंस क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच इंक्लूड होती है एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस को जैसे कि हम लोग ने पढ़ा, सेंटेंसेस को वी कॉल इट क्लॉज और इवन. नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस. If you have noted it down, please acknowledge me by writing yes, मन सक्सेना. Quickly note it down. I am giving you 1 minute time.
After this, we are going to discuss classification of sentences, or you can say a clause. Clause के classification पढ़ेंगे. So the clause are of two types. The first one is independent clause, or you can say a principal clause. Second is dependent clause, or you can say subordinate clause. ठीक है, these are the clauses that we are going to discuss today. Now let's talk further. First heading you write, that is independent clause. Independent clause क्या होता है? Independent clause is that clause which includes subject, predicate, finite verbs, and ultimately it makes a complete sense. That is known as independent clause. Independent clause में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके साथ एक प्रेडिकेट होता है. प्रेडिकेट मीन्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट, एंड इट ऑल्सो हैज़ इन्फिनाइट वर्ब. ओके, इन्फिनाइट वर्ब क्या होता है? जिसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट को ही यूज़ करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, एंड इट डायरेक्टली क्रिएट्स अ मीनिंग. दैट इज़ नोन एज इन्फिनाइट वर्ब, एंड अल्टीमेटली इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज में 3 पार्ट्स होते हैं. इन इंडिपेंडेंट क्लॉज के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज नाउन, फर्स्ट पार्ट इज नाउन, second part is adverb, and the third part is adjective. इन 3 पार्ट्स को मिला करके बनता है इंडिपेंडेंट क्लॉज. आई एम गोइंग टू राइट सर्टेन एग्जांपल्स. तो अभी तक समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि पूरे सेंटेंस की मीनिंग खुद ही बता देता है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर पार्ट ऑफ द क्लॉज टू डिफाइन इट्स मीनिंग. इसका पहला एग्जांपल है, सिंपली इफ आई राइट इट इज डार्क, फुल स्टॉप. सो दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसमें किसी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड इज
second sentence, if I write you should go, again this sentence is a complete, it's making sense and it does not require any other clause, so that is why it is known as independent clause. इसको और अच्छे से अगर डिफाइन करके लिखा जाए तो नेक्स्ट एग्जांपल कुड बी he is intelligent but he is selfish too. अब यहाँ पर एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें दो पार्ट्स हैं. जो पहला पार्ट है ही इज़ इंटेलिजेंट, दिस इज़ ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. लाइकवाइज नेक्स्ट सेंटेंस कुड बी, मन सक्सेना, आर यू नोटिंग इट डाउन और नॉट? एंड दोज हु आर ऑनलाइन प्लीज एक्नॉलेज मी. I want to come but I have some work to do. Now in this case I want to come is an independent clause and the next part of the sentence is subordinate clause. I hope that you have understood. जिसको नहीं समझ में आया please acknowledge and please note down. I am giving you 2 minutes time to note it down. Okay, that's nice that you have noted it down. Now one more question, if you have any doubt, any query related to the topic that we have discussed till now, you can ask by writing it in the chat box. Shall I continue further, yes or no? Please type it. Shall I continue?
Now we are going to discuss dependent clause. Now what is dependent clause? Dependent clause को हम लोग subordinate clause भी कहते हैं. Like we call independent clause principal clause. Likewise, dependent clause we say subordinate clause. Now what is dependent clause? It requires main clause to create a meaningful sentence. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हमेशा एक दूसरा क्लॉज चाहिए होता है जस्ट टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस. वो अकेले ही सेंटेंस की मीनिंग को डिफाइन नहीं कर सकता है. तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो हम लोग 3 कैटेगरीज के साथ पढ़ेंगे. फर्स्ट इज नाउन क्लॉज. ओके. सेकेंड इज एडजेक्टिव क्लॉज. Okay, and the third one is adverb clause. Third one जो होता है that is known as adverb clause. So we'll take the very first clause beginning with noun clause. नाउन क्लॉज के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लॉज कैसे बनाता है. नाउन क्लॉज जस्ट नोट इट डाउन. इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज that functions like a noun. In the sentences and generally acts as a subject, or you can say an object. तो नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि फंक्शन करता है सेंटेंस में एज अ नाउन. वो सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है. नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. एग्जांपल कुड बी आई थिंक you will like it. Now here in this case I think जो हो गया वो हो गया आपका मेन क्लॉज. ठीक. आई हो गया सब्जेक्ट with the main clause the sentence. और you will like it जो हो गया that is an object. और ये जो ऑब्जेक्ट है किसको बता रहा है? डायरेक्ट क्लॉज को, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज को. इट इज़ टेलिंग अबाउट डिपेंडेंट क्लॉज कि सब्जेक्ट ने सोचा कि सेकेंड पर्सन विल लाइक दैट. सो हेयर इन दिस केस दिस सेंटेंस, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज दिस क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट clause, that is the main clause. Please note down quickly, so we'll move further. If you note it down, please acknowledge me. नोट कर लेते हो तो एक्नॉलेज कर देना चैट बॉक्स में टाइप करके.
Okay, that's nice. So are you understanding what I'm explaining right now? इतना समझ में आया? Independent clause with the usage of noun, yes or no? Man. Now the next example could be where she went. Okay, that's good. Where she went, comma, is not known to anyone. The subject has gone where nobody knows. So in this case, dependent clause is used as a subject. This is known as dependent clause क्योंकि यहाँ सेकंड सब्जेक्ट की बात हो रही है पहले. ठीक है, जब सेकंड सब्जेक्ट की बात या थर्ड सब्जेक्ट की बात होती है सेंटेंस की शुरुआत में, तो दैट इज़ नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज, तो यहाँ डिपेंडेंट क्लॉज क्या बन गया है आपका? सब्जेक्ट. ठीक. इज़ नॉट नोन टू एनी वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज that is related to object. I hope that you have understood. Now move on to the next category, that is adjective clause. अब हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो अ डिपेंडेंट क्लॉज. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट क्लॉज दैट acts as an adjective and hence modifies noun or pronoun. जैसा कि तुम लोग को पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं. एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को मॉडिफाई करते हैं. तो हेयर इफ़ वी आर यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज एज अ डिपेंडेंट क्लॉज, देन हाउ द सेंटेंस विल बी फ्रेम्ड, let us discuss, let us know with the help of an example. First example, that is, I used the notebook that had a red colored कवर. तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर जो है, जो पहला सेंटेंस है, पहला पार्ट है सेंटेंस का नोटबुक तक का, दैट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस कंसिस्ट एज, दिस टेल्स अस एज दैट इट इज़ अ सब्जेक्ट. और नोटबुक पता है हम लोगों को नोटबुक क्या होता है? नोटबुक इज़ अ नाउन. ओके. And the rest part from starting from that had a red colored cover is a dependent clause. And the rest, the latter part of the sentence is known as object. अब यहाँ जो red है, red क्या कहला रहा है? red is an adjective. और adjective किसके बारे में होता है? noun के बारे में. बन सकता है ना? प्लीज़ नोट इट डाउन. आई एम गिविंग यू 2 minutes टाइम. When you note it down, please respond so that I can continue.
Okay, that's good that you have noted it down. इतना समझ में आया? If you have any doubt, any query, you can ask. ना एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है उसको हम लोग दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं, जिससे कि टॉपिक और क्लियर हो जाए. एडजेक्टिव क्लॉज का ही दूसरा टॉपिक है, एग्जांपल है. सेकेंड एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज is the hat which was made of jute was my favorite. अब here as you can see, hat जो है, hat is noun. यहाँ पर hat के लिए वर्ड यूज़ किया गया है जूट की, वो hat जो है जूट से बनी है. सो here जूट कैन बी referred as adjective. Okay, hat is a subject and this part of the sentence till here is made of, it's known as dependent clause, is known as dependent clause. Okay, and starting from jute till favorite is known as object. So Man Saxena, have you understood with these two examples? Shall I continue? Okay, that's nice. Now the last category comes of dependent clause is adverb clause. तो अभी तक हम लोग ने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में पढ़ा, नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ा. थर्ड थिंग इज एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब जैसा कि आपको पता होगा, एडवर्ब क्या होता है? दैट मॉडिफाइज वर्ब. जो वर्ब को मॉडिफाई करता है दैट इज नोन एज एडवर्ब. सो दिस क्लॉज इज टोटली बेस्ड ऑन एडवर्ब. अब यहाँ पर क्या है एडवर्ब के बारे में? दैट जस्ट नोट इट डाउन. इट इज ऑल्सो a dependent clause that highlights an adverb. ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि केवल एडवर्ब को ही हाईलाइट करता है. ठीक. नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी आर गोइंग टू understand more clearly. Example is wait here till I come back. Now here in this sentence, till I come back is a dependent clause. क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन से कह रहा है कि आपको यहीं पर रुकना है टिल आई कम बैक. सो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. वेट हियर तक होता तो दैट इज नोन एज डिपेंडेंट. अगर मैं लिखता वेट हियर दैट वुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन अगर ये सेंटेंस पूरा हो रहा है वेट हियर टिल आई कम बैक, इट मीन्स इट इज शोइंग एन डिपेंडेंट क्लॉज.
and this dependent clause is related to adverb. Next example, I shall be late as I have meeting. As I have a meeting जो है ये है फर्स्ट पर्सन अपने खुद के बारे में कह रहा है कि वो लेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दिखाई जा रही है क्योंकि उसकी मीटिंग है, ही हैज़ टू अटेंड अ मीटिंग. सो हेयर इन दिस part of the sentence is known as dependent clause, and this part of sentence is also related to adverb. Man Saxena, please note it down. I am giving you 2 minutes time. Okay, Suman, I suppose that you must have understood the concept that we have discussed today. Please respond. उसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ शो मी अ थम्स अप. Okay, good. So I'm going to give you a very small exercise. Only 3 sentences I will give you. You just need to identify the adverb clause. Okay. You just need to identify the adverb clause. So the exercise is identify adverb clause. First sentence is
put the key where you can find it easily. I am happy that you have liked it. We shall stay with you if it rains. अब मन इस 3 सेंटेंसेस में एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई करके चैट बॉक्स में लिख के मुझे दो. आई एम वेटिंग क्विकली. Okay, your answer is correct. Thank you so much. बाकी जो 2 सेंटेंसेस हैं उनके आंसर लिख करके विजडम ग्रुप पे आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.